हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके साइंस एरिना। तो आज हम माने कौन डिस्कशन करिया ना सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन डिस्कशन करिया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आउ कौन डिस्कशन करिया ना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जे सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन जानिबा आउ तार डिफरेंशियल इक्वेशन कौन जानिबा। ठीक अछि, जे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक अछि, तो ए दुईटा जिंस आज हमें जानिबा। कौन जानिबा ना सिंपल हार्मोनिक मोशन कोन आ डिफरेंशियल इक्वेशन कोन होते ता पई सिंपल हार्मोनिक मोशन पई डिफरेंशियल इक्वेशन कोन होते। ठीक अछि, तो ए दुईटा जिंस आज हमें जानिबा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन विषय रे पढिबा पूर्व सेटा कोन फास्ट जानिबा ना ता डेफिनेशन कोन जानिबा फास्ट। हां कि ना? तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन काहा को कहिबा फास्ट। ठीक अछि ना डेफिनेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन फॉर कहा पई ना सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो ए particle is said to be simple harmonic. A particle is said to be simple harmonic motion if the restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement and has direction is opposite and has direction is opposite to the displacement. Opposite to the displacement. ठीक अछि, ठीक अछि। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोन फास्ट ना ए पार्टिकल इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। जे गोटे पार्टिकल सेते बेले सिंपल हार्मोनिक मोशन कहिबो जेते बेले if the restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement। जेते बेले रेस्टोरिंग फोर्स ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काहा को करिवो ना डिस्प्लेसमेंट को। तो एठी मन रे क्वेश्चन है फर्स्ट जे भाई रेस्टोरिंग फोर्स कोन है ना, रेस्टोरिंग फोर्स कोन है ना। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट तो हम कोन जानि छे, तो रेस्टोरिंग फोर्स कोन देखो। रेस्टोरिंग फोर्स कोन लेट गोटे पार्टिकल टा को मु कोन करबी ना एमते मुड़ीबी। कोन करबी मुड़ीबी। ठीक अछि, ए मुड़ीला समय रे इहा दर कोन होची ना किछि फोर्स स्टोर होची। कोन होची किछि फोर्स स्टोर होची जा पर मको छाडी देला पर ये तार पूर्व अवस्था कोन होची चाली आउची। तो ए इहा देहर जो फोर्स टा स्टोर हैला ताकू हम कोन कहबा ना रेस्टोरिंग फोर्स। कोन कहबा रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक अछि, जे से गोटे फोर्स जे गोटे पार्टिकल टे को डिस्प्लेसमेंट करि सारला पर तार पूर्व अवस्था को फेरै आने ताकू हम कोन कहबा रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक अछि, तो restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement। का को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करबो ना डिस्प्लेसमेंट एंड its direction is opposite to the displacement। ठीक अछि, तो डायरेक्शन कोन होबो ना डिस्प्लेसमेंट रो ऑपोजिट टा होबो। चलो जानिबा केमती कोन होउची या डिफरेंशियल इक्वेशन टा कोन हला। तो प्राय मु भाबुची समस्त थरे नोट कर दे हाकू। तो देखो एटा तो डेफिनेशन हम जानिले जे डेफिनेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो कि ना। देखो तापरे जे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
according to the definition, the definition अनुसार हम कौन पाइले, let F is equal to restoring force, restoring force ठीक अछि जे F कोन ना F होची restoring force ठीक अछि ठीक सेमिति F is equal to restoring force, y is equal to displacement दीटा जिंस आछला ना, a particle is said to be simple harmonic motion if the restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement, then y is equal to लेट हम कोन धरले ना displacement कोन धरले displacement, then definition displacement then definition अनुसार हम कोन जानि छे ना restoring force directly proportional to the displacement, na F directly proportional to the y, here y is the displacement है ना displacement तापरे देखो आमे जतले प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठेइबा ततले कोन यूज करिबा गोटे कांस्टेंट व्यवहार करिबा ग्रेविटेशन चैप्टर को आमे जाने है ना कि आमे ता पूर्वरु मध्ये जाने जे जतले प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठेइबा उठा जाए ततले कांस्टेंट रो आवश्यकता पड़े, तो देखिबा जे F is equal to minus ky, k ता माइनस कोन पई हला ना k होची प्रथम रो कहितला जे होची डायरेक्शन होची कोन रहबो अपोजिट रहबो आउडी k कोन ना हियर k is equal to proportionality constant कोनटे proportionality constant ठीक अछि k कोन ना proportionality constant यहाँ को आउ कोन कहा जाए ना यहाँ को स्प्रिंग कांस्टेंट मध्ये कहा जाए कोन कहा जाए ना स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक अछि स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक अछि या को आउ कोन कहा जाए ना स्प्रिंग कांस्टेंट बोली मध्ये कहा जाए देखिबा तापरे कोन देखो f is equal to minus ky हमें पाई गले लेट यहाँ को धरनबा हम कोन ना इक्वेशन 1 ठीक अछि या को कोन धरनबा इक्वेशन 1 तापर देखो according to the Newton's second law, according to the Newton's second law, Newton का second law हम कौन जानते हैं F is equal to ma, जे force is equal to mass into acceleration है कि ना एटा में जानि छे जे according to the Newton's second law F is equal to ma, देखो F is equal to ma नोबार काहे कारण नाठी हम F is equal to minus ky निजे तोटे हमर पाइबार कोन अछि या डिफरेंशियल इक्वेशन ता पाइबार अछि हम सेति पई F is equal to ma मध्ये हम जानि छे कि नहीं देखो या को डेरिवेटिव कोला हम कोन पाइबा ना डेरिवेटिव बुझी या को जदी हम डिस्क्राइब करिया कोन पाइबा देखो F is equal to m into acceleration जो कि ना वेलोसिटी रो डेरिवेटिव with respect to time ता हम एठी लिखि परिया कोन ना dv by dt वेलोसिटी रो डेरिवेटिव with respect to कहा को ना टाइम को देखो तापरे कोन जान छै हमें ना F is equal to m into v जे कि डिस्प्लेसमेंट रो डेरिवेटिव हो कि ना जे with respect to time एठी डिस्प्लेसमेंट हम कहा को धरछे y को कहा धरछे y को देन F is equal to m into d by dt v रो डेरिवेटिव वेलोसिटी रो कहा को पाइबा ना डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करबी देन dy by dt कहा को रेस्पेक्ट करी ना टाइम with respect to time ये होची y डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि पाई गले हमें देन जदी आको हम ये करिबा सॉल्व करिबा देन F is equal to m into d square y by dt square आगे ना d square y by dt square पाया कि नहीं dt थला ना ठीक dt थला मिसप्लेस देखो dt स्क्वायर d स्क्वायर y आगे ना जदी हम याको सॉल्व करिया ठीक अछि देखो लेट याको इक्वेशन 2 धरनबा इक्वेशन 1 रे हम कोन उठे पाइथिले ना f is equal to minus ky इक्वेशन 2 पाइले कोन ना f is equal to m into d square y by dt square देखो जदी हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करिबा कोन पाइबा देखो जदी हमें इक्वेशन 1 आ इक्वेशन 2 को कंबाइन करिबा देन कोन पाइबा
ना देखो इक्वेशन 1 रे हम कोन पाइले f ky इक्वेशन 2 रे कोन पाइले m d square y by dt square तो एटा हम लिखि परिया कोन ना लेफ्ट हैंड साइड रे f फोर्स दीटा को अछि राइट हैंड साइड रे दीटा कोन बे समान हेबे लिखि परिया हमें m d square y by dt square is equal to minus ky हो ना minus ky जदी हमें m टा को आर पट के निजो कोन हिजो एपर मल्टीप्लाई होछि आर पट गले डिवाइड हिजो ना देन d square y by dt square is equal to minus k by m into y हो ना आराम से हिजो देखो आमे कोन जानि छे देखो देखो हम कोन जानि छे देखो नने एटा को एपट के नै एले कोन पाइबा ना d square y by dt square plus k by m into y is equal to 0 ठीक अछि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कोथमे सिंपल हार्मोनिक मोशन या आगुरी मध्ये हम सॉल्व कर परिया वी नो दैट आमे कोन जाने देखो आमे आगुरी कोन जानि छे ना k by m is equal to omega square होगी ना जे omega is equal to k by m रो रूट ओवर देन k by m is equal to omega square ए कथा में जानि छे कि नहीं आगर जानि छु होगी ना देखो एटी k जे कि उने स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होगी ना k गुटे कि सठी स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जेटा स्प्रिंग कांस्टेंट आमे नेतले k स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग देखो यदि k हाई होबो बा मोर स्टीप होबो बले कोन होबो फास्टर ऑसिलेशन होबो जदि m एठी हम कोन जानि छे ना मास जदि मास अधिका होबो देन कोन होबो ना स्लोअर ऑसिलेशन होबो यदि फास्टर स्लोअर ऑसिलेशन होबो स्लोअर ऑसिलेशन होबो हनी ना जदि k टा कोन ना स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जदि k अधिक होबा मोर स्टिफ होबो देन फास्टर ऑसिलेशन होबो जदि m टा मास होय देन मास जदि अधिक होबो मोर मास जदि होबो एठी तो मोर मास जदि होबो देन स्लोअर ऑसिलेशन होबो तो सेही में हम जाके जान कोन ना k/m = ओमेगा स्क्वायर ठीक अछि जदि k हाई होबो मोर ऑसिलेशन होबो जदि k लो जदि m हाई होबो देन स्लोअर ऑसिलेशन होबो फास्टर ऑसिलेशन होबो स्लोअर ऑसिलेशन होबो तमे ए k/m = ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन रे पुट करि परिया को इक्वेशन रे ए इक्वेशन रे k/m = ओमेगा स्क्वायर हम आराम से पुट करि परिया लिख दवा देखो देन दिस then I'm कोन जानथले ना k/m = omega square that is equation 3 then equation 3 becomes कोन हो ना d square y by dt square plus omega square y is equal to 0 ठीक अछि equation 4 represent the differential equation of simple harmonic motion देखो फर्स्ट ऑप्शन जानबा कोन करले ना a particle is said to be simple harmonic motion if the restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement ठीक अछि and कोन ना the direction is opposite to the displacement ठीक अछि देखो ताने हम रेस्टोरिंग फोर्स का देखले f को आउ एटा f कोन देखले रेस्टोरिंग फोर्स y को कोन देखले displacement ने f directly proportional to y f minus ky k is the spring constant ए कथा में जानि नलु जे के कोन ना स्प्रिंग कांस्टेंट नेगेटिव किन कला ना डायरेक्शन ऑपोजिट अछि ठीक अछि तापर कोन जानले ना हम जानि छु f ma then m a को हम कोन जानि छु ना डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम then dv by dt फिर जदि हमें वेलोसिटी को केमति पाइबा ना डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम m into dy by dt ठीक अछि dy by dt ये with d by dt then किसे जो ना m into d square y by dt square तापरे ए इक्वेशन कॉमन
कंबाइन करिबा पाइबा कोन d square y by dt square plus k by m into y is equal to 0 देन आमे k by m कोन जानछो ना ओमेगा स्क्वायर ठीक अछि जे एटी केटा कोन ना स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जदी स्टिफ अधिका हो फास्टर ऑसिलेशन हो m टा कोन ना मास टा जदी मोर मास हो त ऑसिलेशन स्लोअर हो कि ना तो एही কথা ଆମେ ଜାଣିलु जे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो फाइनल रिजल्ट कोन पाइलु ना सिंपल हार्मोनिक मोशन रो डिफरेंशियल इक्वेशन कोन होते ना द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कोन पाइलु ना d square y by dt square plus omega square y is equal to 0 question 4 this equation represents the differential equation of simple harmonic motion ठीक अछि देखो नेक्स्ट क्लास को यार सॉल्यूशन कोन जानिबा बुझियला।